Came to future CAs, hope you all are doing well. This is CA Divesh Harpalani, your faculty for CA Final AFM. काफी CA finalists की ये queries आ रही है, especially after the May 26 results. के sir, is there any batch that we can take for the November 26 exam preparation? Especially अब given Jan 26 का पेपर difficult आया, May 26 का तो पेपर और भी difficult आया, probably toughest in the history of ICI. कहीं ना कहीं the feeling is that ICI is changing its paper trend, paper style, asking more conceptual questions, asking lengthier papers. कहीं ना कहीं पेपर पैटर्न इज चेंजिंग, दोज क्वेश्चंस दैट वर नॉट आस्क्ड सालों तक वो क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, एंड हेंस कहीं ना कहीं द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग conceptually has increased a lot. So unfortunately, if someone couldn't clear in May 26 but November में एग्जाम है या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका November 26 या May 27 में, then I am bringing AFM Exam Oriented Batch for you guys, and the batch is going to start live on 1st of July. This video is going to cover the details of this batch fully in detail. So stay tuned. First of all, the best part about this batch is कहीं ना कहीं given जो बच्चे May 26 के लिए पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं था या उन्होंने सम सॉल्व नहीं किए थे, पढ़ा सबने था, 100% सबने सम सॉल्व भी किए थे, बट कहीं ना कहीं पेपर इतना टफ आ गया, लक डिड नॉट फेवर, या फिर कहीं ना कहीं उनकी जो स्टडीज थी वो ये एक पैटर्न को सोचकर थी, एबीसी एनालिसिस को सोचकर वो पैटर्न चेंज हो गया। तो दे डोंट नीड टू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। क्या आपको पूरे 200 घंटे के लेक्चर्स देखने की जरूरत है? नहीं। इसीलिए आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच है विच इज जस्ट 95 आवर्स, विच इज इनफैक्ट रफली 25 डेज, ताकि ये 25 दिन में आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। अगर एक्चुअली आप लेक्चर्स के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, 25 डेज में आपका पूरा सब्जेक्ट from scratch including conceptually plus question practice, both classes plus self study खत्म हो सकता है, and you can be very well prepared for the November 26 exams. So what all will be covered in this batch? A lot of questions have come कि sir सिर्फ क्वेश्चंस कवर्ड होंगे या कॉन्सेप्ट्स भी कवर होंगे? गाइस, कॉन्सेप्ट्स विल आल्सो बी कवर्ड, इनफैक्ट दैट इज द मोटिव। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट हो गया है अब आईसीआई एग्जाम्स के लिए, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से तो वैसे भी काम नहीं चलेगा, एंड हेंस कॉन्सेप्ट्स विल डेफिनेटली बी कवर्ड. Not only that, we will also be solving questions live in the class. We will be solving the LDR questions live in the class to the extent needed, and other questions also to the extent possible we will be discussing in the class. So, क्या ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है? नहीं. क्या ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बैच है एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे ही नहीं? ऐसा भी नहीं है. द आंसर इज समवेयर इन द मिडिल. देयर विल बी क्वेश्चंस दैट विल बी प्रैक्टिस, देयर विल बी कॉन्सेप्ट्स फॉर श्योर, लेकिन वी विल बी सॉल्विंग एलडीआर क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस क्लास में नहीं सॉल्व होंगे बट डिस्कस होंगे. What is the duration of this batch, sir? The duration of this batch is roughly 95 hours. The best part is what, guys? The best part is this batch is going to be 100% live. लेकिन अगर कोई बोल रहा है सर मैं लाइव नहीं अटेंड कर पाऊंगा, तो रिकॉर्डेड क्लास लेने का भी ऑप्शन है. लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपका नवंबर 26 में एग्जाम है, कहीं ना कहीं बिकॉज दिस बैच इज स्टार्टिंग ऑन 1st जुलाई, अगर आप लाइव ले लेते हो एंड एवरी डे यू आर वाचिंग द लेक्चर, एंड उस दिन जो लेक्चर हुआ है उसके साथ साथ आप अपना अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, इन दोस 25 डेज एक्चुअली आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली इंक्लूडिंग ऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, अगर हो सके तो आप लाइव अटेंड करो, बट अगर आपका कोई ऑफिस इशू है, आपका स्केड्यूल मैच नहीं कर रहा है, आपने सोचा उन दिनों कोई और सब्जेक्ट लेना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन अवेलेबल है. एज सून एज द डेज लेक्चर गेट्स कंक्लूडेड इन द लाइव बैच, उसी का रिकॉर्डिंग तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा. सर क्या ये सिर्फ पैच है? क्या बुक्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स 100% यू विल गेट द बुक्स, फिजिकल कॉपीज ऑफ द बुक्स. सो यू विल गेट द कॉन्सेप्ट बुक which I am calling Pulse. The reason I'm calling it Pulse, so the name of the book is AFM Pulse. The reason I'm calling it Pulse is इसके दो रीजन है. Pulse मतलब क्या? Pulse is effectively your heartbeat, right? The way heartbeat comes so naturally to you, right? वो आपको फील नहीं भी कर रहे हो तो इट इज जस्ट देयर. सिमिलरली आई वांट दैट एएफएम इतना नेचुरल हो जाए आपके लिए कि उसके बारे में आपको कॉन्शियसली कुछ करना ना पड़े. इट जस्ट कम्स नेचुरली टू द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज देयर. And second logic is finance, guys, is the heartbeat of any business. You all are going to be future CFOs of multi-million dollar companies. So I want finance to come as naturally to you as a heartbeat, and hence I have called it Pulse. And there is also going to be a question bank which will have 100% ICI coverage, all RTPs from May 18, all past papers from May 18,
all MTPs from May 23, and all ICAS study material questions, whether that is an illustration, whether that is a TWAG question. In fact, few examples also, kabhi na kabhi ऐसे example में से भी question बना के पूछ लेता है. So all the important examples also have been included. Let me show you both the books how they look like. So सबसे पहले बात करते हैं concept notes की. So let's say this is Forex का chapter. Forex chapter में सबसे पहले आप देखोगे, the best part about these concept notes is your chapter 1 will be the basics of the chapter. Your page 1 of every chapter will be the basics of every chapter which you need to know before you start the chapter. Then secondly, and of course there are going to be multiplicity of these boxes, which is what are the formulas. There is going to be a memory trick as well, and this memory trick is not to learn, this is not to ratify. ये memory trick इसलिए कि आपको concept इस तरह से अगर आप सोचोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. तो एग्जाम में अभी आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो वो सोच क्या उस टाइम पे सोच होनी चाहिए, वो सोच मेमोरी ट्रिक्स में दी हुई है. What are the key points, if any, are also given. And if I was to go a bit step further, you see, in fact, यहाँ पे आपको there are tables, there are flowcharts that are given to explain you the concepts so that you are able to understand them well. And if I was to go to the end of this chapter as well, you see there are a number of these boxes which are standard steps. क्या कॉमन मिस्टेक्स है? अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई कीप सजेस्टिंग दिस टू एवरीवन, कि आपको अपनी जो गलतियां कर रहे हो सम सॉल्व करते हैं, सिर्फ एएफएम के लिए नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी अगर आप गलती कर रहे हो सम सॉल्व करते टाइम, उस गलती को आप एक बुक में लिख दो, वरना वो गलती नेक्स्ट टाइम वापस रिपीट होगी. यू शुड नोट डाउन ऑल योर मिस्टेक्स एंड शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. सो कहीं ना कहीं जो भी कॉमन मिस्टेक्स है, आई हैव written it down in the book so that you are able to refer. Key point, as I mentioned, has been mentioned. So there are boxes like standard steps, there are boxes like examiner's trap, which is common mistakes, there are boxes like key points, memory tricks, and of course formula wherever it is required. Okay, and also at the end of every chapter there is a summary of whatever the key concepts were of the chapter, decision rules, as well as whatever formulas were there. So what are the key highlights? Number one, this is, and of course needless to say, this is a well summarized concept book, in the sense अगर आप ये बुक को पढ़ रहे हो, आपको अलग से ऐसे स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट सर, ग्रीन मेल या पॉइजन पिल वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको एड्रेस करता हूं इन अ बिट. लेकिन अगर आप ये पढ़ रहे हो, देयर इज नो नीड टू रेफर टू आईसीएआई स्टडी मटेरियल सेपरेटली, एंड दिस इज वेल समराइज्ड. Small book, it is not a very big book, it is not bulky, so it is easy to read. All basic concepts, all the assumptions that need to be taken as per ICA are also written. वो ही फर्स्ट पेज में मैं दिखा रहा था आपको. जो भी key points है, common mistakes है, they are also listed down. Formula and steps are also separately listed down. And last but not the least, you have also been explained all the concepts. If I was to scroll up a little bit, you see जैसे इस chapter में आपको timeline view वगैरह दिया हुआ है. You've been told how do you have to think. हाउ डू हैव टू थिंक. ये होता है ना, हम लोग कहीं ना कहीं फेटा फॉरवर्ड्स के केस में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किस केस में हम लोग को इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगाना है, स्वैप डिफरेंस क्या होता है. सो हाउ डू हैव टू थिंक इज आल्सो समथिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड, एंड दीस फ्लो चार्ट्स, दीस इमेजेस आर देयर सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट. अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आप विजुअलाइज करोगे इस चार्ट को, यू विल नो हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, सर What about theory of practical chapters, जिसमें से MCQs के chances है. The classic example was poison pill, green mail, etc. जो chapter 14 merger and acquisitions के MCQs पूछे थे. For every chapter there are separate theory handouts. There are separate theory handouts which are there. And as you can see now, इसमें अगर आप देखोगे जो डिफेंस टैक्टिक्स है, ये वाला आईसीआई ने जो दिया हुआ है डिटेल में, एक इस हर एक पे एक पैरा दिया हुआ है, वो मैंने एक लाइन में आपके लिए समराइज किया है, जस्ट इनफ फॉर यू टू बी एबल टू आंसर दोज एमसीक्यूज इफ दे आर देयर इन द एग्जाम. क्योंकि क्या होता है, यहां तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, करना ही नहीं. अब उस केस में अगर ऐसा एमसीक्यू आ गए तो 8 मार्क्स आपके चले जाएंगे. यहां तो फिर बच्चे आईसीआईएसएम पढ़ने जाएंगे, विच इज देन वेरी बल्कि. सो व्हाट डू यू डू, दिस इज द बेस्ट मिडल वे वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स यू सी, पॉइजन पिल हैज बीन मेंशन्ड, green mail has been mentioned, pacman defense, everything that was tested in the May 26 exams, and not just May 26 exams, everything that is there in the ICS study material has been mentioned. All the theory questions have been mentioned. For example, ये ICS study material का theory question है, इसको अलग से यहाँ पे mention कर दिया है. तो मैंने आपको practical chapter के concept notes भी बता दिए, practical chapters के theory notes भी बता दिए. These are those pages which you don't have to learn. These are those pages जो आपको simply read करना है, ताकि इसमें से अगर MCQ पूछ लिया तो आपको आना चाहिए. Last but not the least, sir, what about theory chapters? Let me show you a theory chapter, and this is the best part, guys. Theory is something that I genuinely believe is scoring in AFM, but लोग इसको छोड़ के जाते हैं. So उसका हम लोग ने तरीका ये निकाला है. First of all, these are well summarized notes. अगर आप इसको ICA के study material से compare करोगे, तो फिर, and actually why don't I show you the ICA study material? Wait.
So this is the ICI study material for chapter 15, which is startup finance. ये वाला जो आंसर है, which is innovative ways to finance a startup, ये देखो आप इस तरीके से दिया हुआ है, which is in paras, कहीं ना कहीं difficult to remember, काफी बड़ा आंसर है अगर आप यहाँ पे देख सकते हो. And you see our notes, this is our notes, हम लोग ने इसको दिस इज हाउ वी हैव प्रेजेंटेड इट. अब आप सोचो ये इतने शॉर्ट टेबल में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी पॉइंट्स गाइस, ऑल द की पॉइंट्स आर ऑलरेडी मेंशन्ड, ऑल द कीवर्ड्स आर हाइलाइटेड ओवर हियर सो दैट यू कैन रिमेंबर. एंड आई विल टेल यू नाउ द बेस्ट पार्ट. The best part is memory tricks. So for example, यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन इज इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस अ स्टार्टअप विच इज पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइंस. हमारी मेमोरी ट्रिक जो है, काफी बार क्या होता है मेमोरी ट्रिक्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ट्राई के मैं बोलूंगा अगर यहाँ पे पर्सनल फाइनेंसिंग है तो मैं बोलूंगा पी पी एफ, ये वाली चीजें क्या होती है ना, फिर ऐसे एग्जाम में भूल जाते हैं पी से क्या था. यू विल मिक्स अप पर्सनल फाइनेंसिंग एंड पर्सनल क्रेडिट लाइंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या फिर पी फॉर परचेज, पी फॉर पर्सनल याद नहीं रहेगा एग्जाम में, तो आप क्या करोगे. एंड हेंस हम लोग ने मेमोरी ट्रिक्स ऐसे दे रखे हैं इन अवर थियरी नोट्स जो मेमोरी ट्रिक रिलेटेबल भी हो और याद भी रहे. फॉर एग्जाम्पल, पहले अपनी जेब से विच इज पर्सनल फाइनेंसिंग एंड पर्सनल क्रेडिट लाइंस, देन अपनों से विच इज फैमिली फ्रेंड्स पीयर टू पीयर लेंडिंग, फिर अजनबी क्राउड से, फिर अपने बिजनेस पार्टनर से. नेक्स्ट जैसे पिच प्रेजेंटेशन है तो पिच प्रेजेंटेशन के जो है, एंड ये भी द सेम आंसर यू सी इन आईसीआई स्टडी मटेरियल विल रन इनटू 2 पेजेस, बहुत बल्कि होगा. दिस इज जस्ट ऑल द की पॉइंट दैट यू नीड टू राइट इन द आंसर. यू सी द मेमोरी ट्रिक. पहले आप अपना इंट्रो दो विच इज हु यू आर एंड हु द टीम इज. अपना इंट्रो, हु द टीम इज. देन आप दर्द और इलाज बताओ. दर्द इज द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन. Then you talk about market and पैसा plan, which is marketing and projections, competition, कमाई का तरीका, and last में sharks, I want this much, which is the financing. So अगर आप इन मेमोरी ट्रिक्स से याद करने का ट्राई करते हो गाइस, आपको याद भी रह जाएगा. दीज मेमोरी ट्रिक्स आर वेरी रिलेटेबल, प्लस यू बी एबल टू रिमेंबर, प्लस यू सी दीज थियरी नोट्स, दीज आर वेरी मच रिमेंबरेबल इफ आई वाज टू पुट इट दैट वे. टेबल फॉर्मेट में जहां पे भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट फॉर्मेट में है, कीवर्ड्स आर हाइलाइटेड, वर्सेस आईसीआई स्टडी मटेरियल से आपको शायद याद ना रहे, और वो बल्कि हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल फॉर सिक्योरिटाइजेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे ये यहाँ पे वर्किंग ऑफ अ ब्लॉकचेन लिस्टेड इन स्टेप्स, एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन, सिमिलर टेबल फॉर्मेट, एंड यहाँ पे फेवरेट एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन. ये मेरा ही फोटो है, एआई जनरेटेड ऑफ कोर्स. तो ये क्यों हेल्प करेगा आपको. ये फोटो अगर आप देखोगे तो दिवेश इज एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है. बैंक नोट विच इज, ये बैंक नोट्स मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, पीछे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखा हुआ है विच इज मींस गवर्नमेंट प्लस हेल्थ केयर, एंड ऊपर प्लेन है तो प्लेन मतलब ट्रैवल. अब आप बोलोगे लेकिन सर इससे ये क्या प्रूव होता है कि ये ब्लॉकचेन वाला आंसर है, तो नीचे देखो ये ब्लॉकचेन का फोटो बना दिया है. हाउ टू नो दिस इज ब्लॉकचेन, लुक एट द ब्लू बॉक्स एंड यू नो दैट इज रिप्रेजेंट्स ब्लॉकचेन. फाइनेंशियल सर्विसेज जो नोट था वो फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्रैवल इंडस्ट्री, फ्लाइट, एंड इकोनॉमिक फोरकास्ट बिकॉज दिवेश इज एन इकोनॉमिस्ट. सो अगर आप इस तरह पढ़ते हो ना गाइस, तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर थियरी, एंड इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा पढ़ने में. थियरी में आपको ज्यादा टाइम डालना भी नहीं पड़ेगा, वैसे भी 20 मार्क की थियरी आती है, बट आप छोड़ के भी क्यों जाओगे वो 20 मार्क्स अगर कैश मार्क्स है तो. सो दिस इज द पल्स बुक, दिस इज द कॉन्सेप्ट बुक दैट इज देयर, दिस इज द बेस्ट पार्ट दैट यू विल गेट, एंड ऑफ कोर्स more importantly this is a very summarized version, it's not even bulky, so easier to cover the entire course the day before exam. Coming to the question bank. अब क्वेश्चन बैंक की क्या खासियत है. क्वेश्चन बैंक की गाइस खासियत है 3 या 4. ये मैं बता रहा हूं आपको चैप्टर 3, ठीक है. चैप्टर 1 और 2 में हार्डली समझे, इसलिए मैं चैप्टर 3 बता रहा हूं. सबसे पहली खासियत ये है कि वी हैव सेपरेटेड आउट एलडीआर एंड नॉन एलडीआर क्वेश्चंस. होता क्या है ना कि कई बच्चे एलडीआर को मार्क करते ही नहीं है, एंड देन द डे बिफोर एग्जाम दे स्ट्रगल टू कंप्लीट द कोर्स. 1.5 दिन में कोर्स खत्म नहीं होता है, कौन से क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस एक चैप्टर के कर दिए, एक चैप्टर छूट गया. सो वो चीजें ना हो इसीलिए आपको सारे एलडीआर क्वेश्चंस एक जगह पे मार्क करके दे दिए हैं. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैं भी ऐसा था, जो अपनी बुक में एलडीआर तो मैं तो मार्क कर लिया था थर्ड रीडिंग में फॉर द डे बिफोर एग्जाम, लेकिन एक एलडीआर क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन 1, एक है क्वेश्चन 41, एक है क्वेश्चन 67, एक है क्वेश्चन 91. अब ये 4 क्वेश्चंस के बीच में इतने पेजेस में अगर फ्लिप करूंगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो जाऊंगा, मेरा टाइम भी जाएगा, प्लस मैं नर्वस हो जाऊंगा, अरे इतने सारे क्वेश्चन है मैं देख के नहीं जा रहा हूं. एंड इसीलिए इसका सॉल्यूशन इस कि मैंने ही आपको एलडीआर अलग से करके दे दिया है, एंड दिस एलडीआर इज सुपर एग्जॉस्टिव. सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, all the tougher sums will get covered, all the ambiguous questions will get covered, all the key points will be covered. So सबसे पहले खासियत is you see section A is LDR questions, and then section B if you see is non-LDR questions, which is exhaustive questions. खासियत number 2, topic wise all questions are given together. So सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक 1 आपने देखा था, सेक्शन ए में भी यही टॉपिक था, सेक्शन बी में भी यही टॉपिक. अगर यहां पे मैं टॉपिक 2 पे आता हूं, एक्सपेक्टेड एनपीवी,
LDR सेक्शन में भी एक्सपेक्टेड एनपीवी वाज द टॉपिक 2। अब आप अगर एक्सपेक्टेड एनपीवी का क्वेश्चन एलडीआर से कर रहे हो पर आपका गलत लग रहा है, आपको लग रहा है मेरे को ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, यू कैन ऑलवेज कम टू सेक्शन बी, ट्रेस दैट टॉपिक एंड देन उसमें से आप पिकअप कर सकते हो। तो जितने भी एनपीवी के क्वेश्चंस है वो बैक टू बैक दिए होंगे, क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 26, 27, सो दैट एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस एक साथ, अगर फिट ऑफ फॉरवर्ड है सारे फिट ऑफ फॉरवर्ड के क्वेश्चंस एक साथ, मनी मार्केट हेज के क्वेश्चंस एक साथ, ताकि अलग अलग जगह पे नहीं, एक टॉपिक अगर आपको पता है कि मेरा वीक है उस क्वेश्चंस के, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस एक साथ। एंड बाय द वे गाइस, काफी बार ऐसा होता है ना, डुप्लीकेट होते हैं ये क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल में भी ये क्वेश्चन इस एमटीपी में भी है, इस क्वेश्चन आरटीपी में भी है। तो उस केस का क्या किया जाए, तो जितने भी हमने सोर्सेज है ना, वो एक साथ हम लोग ने सारे सोर्सेज मर्ज कर दिए हैं, जहां पे भी एक क्वेश्चन मल्टीपल जगह पे पूछा गया था हम लोगों ने उसको एक जगह पे लिख दिया है, ताकि आपको सेम क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार ना पढ़ना पड़े। वी हैव मेंशन्ड द सोर्स। So this is the third thing. All ICAI questions are covered and the including study material. All the sources are mentioned, and अगर duplicate questions थे guys, we have merged those duplicate questions and they are mentioned. ठीक है. Now coming to the next खासियत about this question bank, which is below each LDR question there are common mistakes that are given. अगेन द सेम लॉजिक गाइज, मैं बोलता हूं आपको एक्चुअली अपनी खुद की मिस्टेक्स लिख देनी चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं लिखी है तो एटलीस्ट दूसरों से जो गलतियां होती है, जो कॉमन मिस्टेक्स है, उतनी तो आप देख कर जाओ, ताकि वो एग्जाम में आप गलतियां रिपीट ना करो। सो दिस इज द क्वेश्चन बैंक फॉर यू गाइज। एट द एंड ऑफ द डे तो क्वेश्चन बैंक इज आईसीआई कंपाइलर ओनली, सबके क्वेश्चन बैंक्स में वही है, लेकिन द बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज exhaustiveness, May 18 onwards questions, 100% coverage. Point number 2, LDR and non-LDR questions are given separately so that day before exam you are not struggling. पॉइंट नंबर 3, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए हुए, मैंने आपको बताया था टॉपिक 2 वाज एनपीवी, यहां पे भी आप देखोगे नीचे टॉपिक 2 इज एनपीवी, द सेम टॉपिक। ठीक है। खासियत नंबर 3 इज के आपके सारे के सारे आईसीआई के जो पास्ट क्वेश्चंस के सोर्सेज है वो भी लिख दिए, जितने भी डुप्लीकेट्स है वो रिमूव कर दिए, ताकि आपको बैठ के मैन्युअली एक्सरसाइज ना करना पड़े। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई हैड डन दैट एक्सरसाइज मैन्युअली। अब आप ये सोचो, ये क्वेश्चन जो है 3 सोर्सेज में पूछा हुआ है, तो आप हर सोर्स पढ़ के फिर वो बोलोगे ये तो मैंने देखा हुआ है क्वेश्चन, फिर कट करोगे, उसकी जगह ये वाला हार्डवर्क मैंने आपके लिए कर लिया, आपको ये हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा गाइस। ठीक है। सो जितने हैं सारे यूनिक क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड लास्ट खासियत इज गाइस कि जितने भी कॉमन मिस्टेक्स है हर क्वेश्चन हर टॉपिक के हिसाब से वो हम लोगों ने ऑलरेडी लिस्ट आउट कर रखे हैं। So these are the notes for you guys, concept notes and question bank। क्योंकि May 26 का पेपर टफ था, काफी लोग का ये क्वेश्चन है। सो व्हाट अबाउट न्यू क्वेश्चंस, हाउ डू यू प्रिपेयर अस टू सॉल्व लॉजिकली? तो वैसे तो कॉन्सेप्ट से ही काफी चीजें हो जाएगी, स्टिल आई विल मेक यू सॉल्व अ फ्यू न्यू क्वेश्चंस सो दैट यू नो हाउ टू सॉल्व दीज लॉजिकली। क्या वही न्यू क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। हाउ डू आई नो आईसीआई कहां से क्वेश्चंस उठा के पूछेगा? लेकिन वो न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस विल बी दैट यू नो दैट इफ देयर इज अ टफ पेपर, देन इन दैट केस किस तरह उस नए क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करने का ट्राई करना है। इनफैक्ट वंस द May 26 AFM पेपर गॉट डन, मैंने एक पेपर रिव्यू डाला था जिसमें मैंने, तब तो सजेस्टेड आंसर्स बाहर आए भी नहीं थे, मैंने एज ए स्टूडेंट उस पेपर को अटेम्प्ट करने का ट्राई किया एंड आई अटेम्प्टेड लॉजिकली, एंड मैंने उस वीडियो में बताया भी, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, हाउ वुड आई हैव सॉल्व दिस पेपर लॉजिकली। एंड वो इनफैक्ट हमारे आंसर्स आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से मैच भी हो रहे हैं। दैट ऑल्सो वीडियो इज देयर, यू कैन गो एंड चेक दोस वीडियोस। Next is 2 full mock tests that will be there, which will be personally evaluated by me only, and you will have doubt solving access। काफी लोग का ये प्रॉब्लम होता है सर वर्चुअल लेक्चर्स में डाउट सॉल्व नहीं हो पाते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल बी द वन पर्सनली हु विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स। When does the batch start, sir? The batch starts on 1st July. First chapter will be live on YouTube. For all those who are saying, sir, demo का क्या? First chapter is live on YouTube. You can register, watch the demo. अगर आपको नहीं पसंद आया demo, you can reach out to me and feel free to take a refund अगर आपको demo नहीं पसंद आ रहा है तो, or else you can of course wait. I leave it up to you. The batch ends on 31st of July and the applicability preliminarily November 26 and May 27. November 27, I leave it up to you. I would suggest if you have time, go for a regular batch, wait for the regular batch. Otherwise, you also can take this. Anyways, the coverage will be exhaustive, but for sure, November 26 and May 27, this makes sense. Who should or who should not enroll? This is a very key question, guys. So, who should enroll? पहले बताता हूँ, फिर who should not बताता हूँ. If you have your first attempt in November 26 or May 27, maybe not November 27, but it's your choice.
but your concepts are not clear, you do not remember, given you had taken classes, but the classes were taken 2 years back, अभी आपको याद नहीं है, तो then in that case, या फिर आपको maybe concepts clear नहीं है, you can take this batch, and anyways it is a 95 hours batch, so the duration is manageable, you'll be able to complete the entire subject. If you couldn't clear in May 26, and you are looking for conceptual clarity and preparedness for a tough paper, then this is the batch you need, guys. This is the batch, because your concepts will get cleared, plus you will be solving questions as well. Who should not go for this batch? So if you are someone whose concepts are clear, you are someone whose concepts are clear, or at least broadly clear, except for one or two small concepts or one or two chapters, broadly your concepts are clear. What you need is just revision. आपको याद नहीं है, लेकिन जब पढ़ा था तब समझ में आ गया था. Then in that case, or you need only self practice. ये नहीं है कि questions आपको आते नहीं, but आपने practice नहीं की, आपके end से बाकी है. That is, then in that case you don't need a support. Then in that case you do not need to enroll for the batch. You should practice at your end all the questions. You should watch revision videos on YouTube. If you think you need to revise, तो revision videos देख सकते हो. But अगर आपके concepts clear है, तो please do not waste time in watching the batch. Please do not. If your concepts are unclear for a select chapters, but those select chapters are non-important any which ways, तो वो तो आप revision videos देख के आप कर सकते हो अपने concepts clear. But let's say अगर derivatives, forex, interest rate risk management, options या portfolio management, ये सारे chapters जो है relatively bigger chapters and more important ones, अगर इन सारे chapters की concepts clear नहीं है, then I will suggest you should enroll for the batch. I leave it up to you. But guys, whether or not you enroll, you will still have my support irrespective. Feel free to go for books only. I don't mind. मेरे लिए, and by the way, books के charges are also minimal. I am not making any profit. Trust me, it is only the cost that I am charging from you. I want you to clear November 26 exams. That if you see, the batch pricing also is super minimal. It is 2499 till 28th of June. 2499, guys, think about it. I'm not making any profit. It is only to make sure that you guys are able to clear number 26 exams. And feel free to refer to our free resources on YouTube. What are the free resources? I will come to that in a bit. Postscript is, if your attempt is in November 27 or May 28 or November 28, and you are starting from scratch, if this is the first batch that you are taking, first lecture that you are taking, then I will suggest you to wait for the regular batch. Do not go for the exam oriented batch. अगर आपके पास बहुत time है, please wait करो, go for the regular batch. सर लाइव आपने बोला, लेकिन लाइव का स्केड्यूल क्या रहेगा? इट विल बी मंडे टू सैटरडे 7 to 10 AM. Sunday we'll figure out if need be. Otherwise, I would say आप एक दिन you also can take a break if you want. Monday to Saturday, 3 hours a day, 7 to 10 AM. And for the rest of the day, you can do your self study and you can complete the entire subject. साथ साथ में, how do you register? You can register on cdevesharpalani.com. I will show you the website where you can register. So this is the batch. As you can see, this is where you scroll a little down. This is where the batch is, and you can go ahead and register from here. What are the free resources that will be available on YouTube? Or YouTube, or even Telegram for that matter. Every single day, I am putting daily MCQs on Telegram without fail. At least 3 MCQs from the nook and corners of ICS study material, so that whether or not you enroll for the batch, it does not matter. You guys should be very well prepared to face a tough paper if there is in number 26. एंड रिविजन वीडियोस भी अपलोड होंगे गाइस, बट रिविजन वीडियोस कहीं ना कहीं कुछ जुलाई में होंगे, कुछ अगस्त में होंगे, कुछ सितंबर में होंगे. ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 months 100% चैप्टर्स के रिविजन वीडियोस विल आल्सो बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब. वी आल्सो हैड स्टार्टेड अ सीरीज कॉल्ड थियरी थर्सडेज, जहां पे आई एम पिकिंग वन टॉपिक फ्रॉम अ थियरी चैप्टर व्हिच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव, एंड उसमें मैंने एक शॉर्ट बनाया है विद द मेमोरी ट्रिक, सो दैट आपको याद रहे. So that is all the details that you needed to know about this batch. If there's anything else, do not hesitate to put it in the comment box. You can reach out to me. Also, the contact details are given on the website. Website pe contact details mere diye hue hai, guys. Feel free to reach out if there are any questions that you have. And podte hai, guys, we have to make sure that all of you do end up clearing, and our mission of November 2026 is successful. All the very best, guys, from the bottom of my heart. Any questions, I am happy to answer. All the support that you need, I am happy to answer. In fact, I would go on to say that if you are someone who falls in the category who didn't clear in May 26 because of lack of conceptual clarity,
आप अपने सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा लो गाइस. आई विल, and if you are enrolling for the batch, for all those who are enrolling for the batch who couldn't clear in May 26, I will personally review those certified copies and give you my feedback on what do I think is going wrong for you and what is it that you need to improve. That's all from my end, guys. Please do subscribe to this channel. Nevertheless, whether or not you are buying the batch, it does not matter. Subscribe to the channel because there will be a number of resources, not just AFM. AFM से लेके general overall CA guidance तक, there'll be a number of things because I've someone who's been there, done that. I was fortunate to secure an All India rank 6 in Inter, All India rank 13 in final. I secured 87 marks in AFM. In fact, that was the highest of my 8 subjects back in the day. And hence, I do feel मैंने खुद ने ये जर्नी की हुई है तय. मैंने खुद ने वो स्टडी लीव का प्रेशर झेला हुआ है, पढ़ने का प्रेशर झेला हुआ है. हमारे टाइम पे तो 8 सब्जेक्ट्स होते थे. So because I have been a part of that journey, guys, I am here to guide you and to make sure that you all clear in November 26. All the very best, guys. See you. Hoping to see you in the batch. And for those of you not enrolling also, hoping to see you again in the next video on YouTube. Bye-bye. All the best. Bye.